ब्रह्म कलम। बोलो। विकास को बोलने आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अमरीश सीट बेल्ट बना लगा के बोल रहे हैं गुड भैया, इवनिंग बोलो। सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। राइट सर, मैं ऑन द वे हूँ। मैं इस पुस्तक का मोर देन 50 पार्ट पढ़ा और एक काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, और यह एक मैनुअल के रूप में काम आने वाला है। बहुत बढ़िया। हमें इसका विकास जी ने ऑब्जेक्टिव ही शेयर यही है किया सर। था। हाँ, जी जी जी। इसको एज मैनुअल ही मैं पीएलआर थेरेपिस्ट के लिए मैंने बनाया है। इट विल राइट बिकम ए राइट। मैनुअल। बहुत बढ़िया। मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी प्रोग्राम की। और आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। गौर साहब भी हमारे साथ में हैं, वो हमारे गुरु भी रहे हैं और हम इस बारे में चर्चा भी करेंगे। ये विषय, आई लर्न दिस सब्जेक्ट अराउंड 16 years बैक एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। फिर कई फ्रेंड्स पे, रिलेटिव्स पे आजमाना शुरू किया। बड़े उत्साहवर्धक रिजल्ट्स आए। बड़ा अच्छा लगा इसमें। पहली बार 2020 में, रादर 2017 में मैंने इसको लोगों को बताना शुरू किया। और मुझे लगा कि ये विषय साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के लिए नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। एक और चीज मुझे लगी कि कई बार प्राइवेसी के मैटर्स लेते हुए जरूरी नहीं है कि हम और क्लाइंट आमने सामने हो, इसको फोन पे भी किया जा सकता है। पता नहीं कैसे 2020 में ये ख्याल आया कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके बारे में चर्चा कम होती है। तो एक वर्कशॉप की गई मार्च 2020 में। इसमें 24 लोग आए, फातिमा ने कोऑर्डिनेट किया था उसको। ब्रायन वाइस, जो न्यूयॉर्क में इसकी ट्रेनिंग करते हैं, वो 5 days की करते थे। मैंने जो ट्रेनिंग ली थी वो 2 दिन थ्योरी, 2.5 दिन प्रैक्टिकल था। 2020 तक जूम शुरू हो चुका था। तो मुझे लगा कि अगर थ्योरी हम पहले से कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल में काफी टाइम बचेगा। और 20 मार्च 2020 को जब हमने पहली बार प्रैक्टिकल करना शुरू किया लोनावाला में, तो मैं खुद हैरान रह गया कि कितने चमत्कारी रिजल्ट्स आते हैं इसके। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। तब तक कोरोना लग गया था, आना जाना बंद हो गया था, लेकिन सेशंस कंटिन्यू किए, खासतौर से ऑनलाइन। बहुत इंटरेस्टिंग थे। कुछ लॉजिक की बात मैं भी करूंगा यहाँ पे। विकास छोटा भाई है, लेकिन इस विधा को उसने ज्यादा पहले नहीं, 6-7 साल पहले शुरू किया। और कई बार करते करते इसके साथ कुछ अद्भुत अनुभव हुए, जिसमें से एक ये था कि मैंने खुद विकास का सेशन 4-5 बार ट्राई किया। और एक अद्भुत अनुभव कि हर बार इसको एक अंधेरा दिखाई देता था। और वो अंधेरा ऐसा था कि उस अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो अंधेरा इसके पीछे पीछे चलता था। अजीब अजीब बात थी। और ये सेशन मैंने शनि शिंगणापुर के में भी किया, जबकि मैं मानता हूँ हेड ऑफिस है इसका। और वहां हर बार सेशन हो ही जाता है और सफल भी होता है। जब ये समस्या आती चली गई, अब ये तीसरी चौथी बार भी यही हुआ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सोल्यूशन क्या निकाला जाए इसका। कई बार लगता था ये बिटवीन द लाइफ की स्टेज है, कई बार लगता था लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स की स्टेज है। और एज यूजुअल जब हम फंसते हैं कहीं भी, मेरा स्वभाव ये रहा है, जब हम कहीं भी फंसते हैं तो गौड़ साहब की याद आती है। हमने और विकास ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया गौड़ साहब से, थाना में मिले। और गौड़ साहब ने पूरी बात ध्यान से सुनी। और उसके बाद विकास के लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दी जो मैं खुद हैरान रह गया। लेकिन उस वक्त ये निश्चित हो चुका था कि कुछ ना कुछ बड़ा काम होने वाला है। और आज ये किताब उन्हीं प्रश्न और उत्तरों की श्रृंखला में एक पहला बड़ा कदम है। थोड़ा सा पीएलआर के बारे में परिचय दे दें। कई बार सवाल ये उठता है कि मृत्यु के बाद तो शरीर जल जाता है, मेमोरी ट्रांसफर कैसे होती है। मेरा और इस विषय से जुड़े हुए सभी लोगों का यह मानना है कि आत्मा का विकास एक प्रोसेस है, जिसमें सभी आत्माओं को लास्ट में परमात्मा में विलय हो जाना है। और इस श्रृंखला में उसको एक प्रोसेस पार करनी है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर एक चीज मैं इसीलिए व्हाट्सएप को बार बार याद करता हूँ, क्योंकि मैं और किसी के पास जाने का
साधन भी नहीं होता और जरूरत भी नहीं पड़ती। जब चैलेंजेस की बात आती है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसी समस्या लेके मैं गौर साहब के पास गया था। उन्होंने फिर बताया मुझे कि सारे चैलेंजेस को हंसते मुस्कुराते हुए फेस करना है, ये बहुत बड़ी बात थी। आगे बढ़ते हैं कि मेमोरी ट्रांसफर कैसे होती है। मैं अक्सर एक उदाहरण कोट करता हूं। हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, जो इतिहास एविडेंस बेस्ड है, 2500 साल। इसकी शुरुआत पहिए से होती है, बीच में इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, डीजल इंजन है, लोकोमोटिव है, टेलीफोन, एयरक्राफ्ट है, कैमरा है, प्रिंटिंग प्रेस है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1903 में राइट राइट ब्रदर्स द्वारा एरोप्लेन, एरोडायनेमिक्स, हवाई जहाज का खोजा जाना। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने उड़ाए जाने के प्रयोग करते समय कितना विरोध फेस किया था अपने घर वालों से? दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर थे और हर व्यक्ति उनके सामने एक ही बात कह रहा था, कहाँ टाइम बकवास वेस्ट कर रहे हो ये। और उनको टाइम लगता चला जा रहा, लगता जा रहा था, जुटे हुए थे। ये इन्वेंशन था। इन्वेंशन इसलिए था कि अगर यही टेक्नोलॉजी बना के आज से 1000 साल पहले भी हवाई जहाज उड़ाया जाता तो उड़ जाने वाला था, क्योंकि एयर की डेंसिटी इतनी है कि अगर वेलोसिटी इतनी हो कि वो पंख से इतनी तेज नीचे फेंक सके हवा को, तो हवाई जहाज उड़ जाएगा। ये नियम खाली उस पर नहीं, व्हाट्सएप पे भी लागू होता है। आज हमारी आपकी आदत ऐसी हो गई है, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स फटाक से भेज देते हैं। 25 साल पहले तो ऐसा नहीं था ना। जो चीज हमारे सामने नहीं होती है उसको हम अविश्वास की नजर से देखते हैं, और जब सामने हो जाती है तब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और भूल ही जाते हैं कि कभी हम इस पर शक भी किया कर सकते हैं। और कितनी बड़ी बात है ये, सोच के देखिए। जो चीजें हमें आज नॉर्मल लगती हैं वो खोजे जाने के पहले असंभव लगा करती थी। एक उदाहरण छोटा सा और देता हूं इसी के परिप्रेक्ष्य में। आप अपने मित्र की एक फोटो खींचिए, अपने मोबाइल से खींचिए, और किसी और XYZ फ्रेंड को व्हाट्सएप पे उस फोटो को भेज दीजिए, एक छोटी सी शर्त है। भेजने के बाद आप फोटो डिलीट कर देंगे और भेजने के पहले फ्रेंड को सजेशन देंगे कि वो मोबाइल स्विच ऑफ रखेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक फोटो खींची जाएगी, फोटो खींचने के साथ उसको आप भेजेंगे। भेजने के पहले फ्रेंड को बोलेंगे कि मोबाइल ऑफ कर ले, भेजने के बाद फोटो डिलीट कर देंगे। अब फोटो कहाँ है? प्रश्न इसलिए है क्योंकि आपके मोबाइल से डिलीट हो चुकी है, आपके फ्रेंड का मोबाइल स्विच ऑफ है जिसको ऑन करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। और जब वो जहां भी ऑन करेगा उसको वो फोटो मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूं कि जब वो ऑन करेगा उसको फोटो मिल जाएगी, यानी कि जब उसकी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तब उसको वो फोटोग्राफ मिल जाएगी, उसके पहले उसको नहीं मिलेगी। फिर सोचिएगा, हमारी टेक्नोलॉजी तो 2500 साल पुरानी है, यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी तो लाखों साल पुरानी है, और पता नहीं किस पैरामीटर और किन सिद्धांतों पर वर्क करती है ये। आत्मा की गति कुछ इसी प्रकार की है, शरीर से निकल जाती है, मेमोरी साथ में जाती है, सारी मेमोरीज जाती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि छोटा बच्चा इसीलिए जन्म के साथ बोलना शुरू नहीं करता, क्योंकि वो शुरू में मेमोरीज लेके आया होता है। अगर वो बोलना शुरू कर देता तो पता नहीं कितना क्या हो जाता, कितने झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्स ने ये व्यवस्था की कि थोड़ा समय लगने दो, और तब तक उसकी मेमोरीज जो है पास्ट लाइफ की, वो उसके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। और ये प्रोसेस ये ज्यादा पुरानी नहीं है, कुल एक 37-38 ईयर्स ओल्ड ब्रायन वाइस के साथ एक्सीडेंटली हुआ था। वो एक लेडी का को हिप्नोटाइज कर रहे थे पेट के दर्द के लिए, और करते करते वो पास्ट लाइफ में चली गई थी। कुछ 1988 की बात है। उसके बाद धीरे धीरे इस चीज ने ग्रो करना शुरू किया, और 2000 तक ये काफी बढ़ गई, और 2005 तक और काफी बढ़ गई। और जब मैंने शुरू किया था इसको, तब तक कई लोग इसके बारे में जान चुके थे। आज मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। इसको लेके मैं इतना ज्यादा कन्विंस्ड हूं। मैंने मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ लिखी है, विकास ने देखी है वो किताब, और मैं
ईमानदारी से बता दूं, मेरी किताब विकास के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि शायद मैं उतना समय नहीं दे पाया था। और विकास ने मेरी बुक में कई सजेशंस दिए। मैंने कहा इतना मैं चेंज वेंज कर नहीं पाऊंगा। एक्चुअली वो बुक भी विकास के घर के पास ही रिलीज हुई थी। मैंने कहा तुम अपनी लिख लो। और जब इसने अपनी लिखी ये चीजें, तो एकदम ट्रिटाइज है ये। और हर नौसिखिए इसलिए कह रहा हूं, जो लोग इस फील्ड में एकदम शुरुआत कर रहे हैं, वो भी पढ़ते पढ़ते बहुत सी चीजें जान सकते हैं और इनको जान के प्रयोग शुरू कर सकते हैं, और प्रयोग के साथ सफलता मिलेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स हमको सपोर्ट कर रहा है। और मैं मानता हूं ये सफलता शायद हमको 50 साल पहले नहीं मिलनी थी। इस बारे में मैंने गौर साहब से निवेदन किया है, वो चर्चा करेंगे कि हमको क्यों सफलता मिल रही है, अर्थ के डायमेंशंस में और फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अर्लीस्ट रेफरेंसेस गौतम बुद्ध के टाइम से मिलते हैं, लेकिन काफी लंबे समय तक ये विधा सुषुप्तावस्था में रही है। इसका प्रिंसिपल ऐसे वर्क करता है कि सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है। और ध्यान दीजिए, हम किसी को भी महसूस करते हैं जब, तो हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से टच करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं और नाक से स्मेल करते हैं। हमारे आज के यंत्रों में, व्हाट्सएप को मैं खासतौर से ले रहा हूँ, सिर्फ ऑडियो वीडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन है। हम टच स्मेल टेस्ट के बारे में आज भी डिजिटल इंफॉर्मेशन नहीं बहा पाए। लेकिन पीएलआर सेशन में हमको जब इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें न सिर्फ ये 5 हैं, इसके अलावा भी मैंने खुद कई दिए हुए हैं। जैसे एंजाइटी का आज कोई मेजरमेंट नहीं है, डिप्रेशन का कोई मेजरमेंट नहीं है, हमारी चाल में लड़खड़ाने का कोई मेजरमेंट नहीं है, सोचने में कंफ्यूजन का कोई मेजरमेंट नहीं है। और ये सब आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं तो हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और उनसे हम कनेक्ट करते हैं कि कैसे कोई घटना होती है, क्या रिपरकशन होते हैं। मैंने ये पाया कि इसका अद्भुत लाभ होता है with respect to problems related with chronic ailments, chronic fears and chronic relationship issues। क्यों ऐसा होता है कि कभी किसी के साथ पहली मुलाकात में ही लगता है अरे इन्हीं के साथ ज्यादा वक्त गुजार लेते तो अच्छा था, या किसी के साथ थोड़े समय में लगता है कहाँ गलत जगह आके फंस गए। और ये खाली यहीं पे नहीं, रिलेशनशिप के हर इशू में ये चीज हो सकती है। क्रॉनिक एलिमेंट्स के बारे में बताऊं आपको, यहाँ अमरीश भी मौजूद है। अमरीश ने बहुत ज्यादा सेशन किए हुए हैं, मुझे मालूम नहीं फातिमा है कि नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने सब साथ ही किया था, अमरीश साथ में थे जब कैंप में हुई थी बात। संगीता ने भी, इन लोगों ने बहुत बहुत कैंप किए। और यकीन मानिए हम लोग खुद हैरान रह जाते हैं कि कैसे सफलता मिलती है। और इन कैंप्स में 3-4 रात के कैंप होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके कि ये कैसे किया जाता है, और वो इसको खुद करना शुरू करें और सफलता पाएं, और देखें कि कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा खटाखट 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 हो जाता है। एक दो उदाहरण देता हूं। अगर पेट में दर्द है किसी के, तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में पेट में चक्कू मार के उसकी हत्या की गई हो। सर में दर्द है तो हो सकता है कट्टे से गोली मारी गई हो। रिलेशनशिप के तमाम इश्यूज आते हैं, उसमें हम लोग चेक करना चाहते हैं कि लेवल क्या है, क्या अगले जन्म में उनको यही रिश्ता रिश्ता शर्तों के साथ मंजूर है या नहीं। और फिर कॉर्ड कटिंग की एक्सरसाइज है। कॉर्ड कटिंग पे विकास ने बहुत अच्छा काम किया है, और विकास ने एक और बहुत जबरदस्त काम किया है जो मैं नहीं कर पाया था, अभी बताता हूँ, नाम याद आ रहा है। हाँ, और इसके फियर्स, किसी को आग का डर होता है, किसी को पानी में डूबने का डर होता है। आग के डर का मतलब ये होता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पिछले जन्म में जंगल में जल गए हो, या जबरदस्ती जलाया गया हो, किसी सामाजिक व्यवस्था के चलते कोई सजा दी गई हो जलने की और वो रह गया हो। इन सब चीजों के डर बैठ जाते हैं। इनमें उन स्थानों पर फिर से ले जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए बियर करना होता है। अमरीश को एक बहुत बड़ी सफलता इसमें मिली है कि ईश्वरीय आराधना के रूप में, कि जब शंकर भगवान, हनुमान जी जिसके पास पहुंचना है पहुंचे, और वहां उन्होंने उनकी आरती गाना शुरू कर दी या पूजा करना शुरू कर दिया, और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें। एक और सफलता मिलती है लाइफ बिटवीन लाइफ में, जहां हम
उन जगहों पे जाते हैं जो आत्माएं अब इस दुनिया में नहीं है, और उनसे बात करते हैं। और यकीन मानिए, उनसे बात करने का ये अनुभव बहुत ही आनंददायक होता है। और मैंने कई बार प्रयोग ऐसे भी किए, क्योंकि आप सब समझते हैं प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। कई बार क्लाइंट नहीं बताना चाहते कि पूरी बात, तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है, वहां पे पहुंचाया, और उसके बाद मैंने कहा अपने आप बात कर लो। किसी की मदर गुजर गई है, कि फादर गुजर गया है, तो भाई अपने आप बात कर लो। और वो बात करने के बाद जो चेहरा मुस्कुराता हुआ आता है, सच बता रहा हूँ, प्राइसलेस अचीवमेंट है। हाँ, एक चीज और, मैं किसी से किसी भी काम का कोई पेमेंट नहीं लेता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज के लिए, और विकास भी किसी से कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग प्रोफेशनली ऑक्युपाइड हैं अपनी अपनी जगह पे, तो अपना समय मिलने पर ही ये करते हैं। विकास ने एक और वो एक्सपीरियंस किया था जो मैं नहीं कर पाया था, वो प्लेनचिट का होता है ये। और ये भी मैं नहीं कर पाया था, तो मैंने विकास से कहा कि तुम करके देखो। और एक्चुअली विकास के साथ कुछ रिश्ता भी है, कुछ बन भी ऐसा गया है कि जहां मैं फंसता हूँ, याद करता हूँ विकास को, विकास इसमें क्या होगा। और मजे की बात यह है कि कई बार मेरे कहने के पहले ही विकास को अंदाजा हो जाता है, दादा इसको ऐसे करके देखिए। और मैं हैरान रह जाता हूँ कि इसको पता कैसे चल गया और ये सोल्यूशन निकल आया। एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसके बाद हैंड ओवर करूंगा विकास को किताब बताने के लिए। इस विद्या को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की इच्छा रही मेरी, और मैंने मिनिस्ट्री में कांटेक्ट किया, सेंटर में। बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन विधि का विधान ऐसा। फिर वही बात गौड़ साहब ने फिर यही बताया था कई बार कि जो तुम्हें करना है करो, यूनिवर्स को रास्ता निकालने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल। अगर उनको मंजूर होगा तो करेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में मेरी मुलाकात एक भटनागर जी से हुई। बिल्कुल अचानक हुई, कोई प्लान नहीं था। और चलते चलते 2-4 घंटे में उन्होंने कहा आप सेशन कर देंगे। दिल्ली में बात हुई थी, मैंने कहा सेशन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम जो स्लॉट था पता नहीं कैसे वो खाली हो गया। मैंने उनका सेशन किया, उनको बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। मैंने कहा मैं तो इतना मेहनत कर नहीं पाऊंगा, आपके पास कोई साधन हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि एमिटी यूनिवर्सिटी में ट्राई करते हैं। और 1 महीने के अंदर एमिटी यूनिवर्सिटी में उनके डायरेक्टर्स के साथ, वीसी के साथ मेरी मीटिंग हुई। और उनके 300-350 स्टूडेंट से उनके साथ मैंने डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। बात को करीब 2 महीने हो चुके हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि एमिटी ने इस विषय को अपने आगामी करिकुलम में इंक्लूड करने का डिसीजन ले लिया है। और आजकल वो इस प्रोसेस में है कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, क्या इसकी कमर्शियल वायबिलिटी होगी, और क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। और ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है, और मैं इसके लिए भटनागर जी को धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास को हैंडओवर करता हूँ कि थोड़ा अपने पुस्तक के बारे में बताएं, फिर गौड़ साहब परिचय देके। अगर विकास चाहे किसी केस को कोई बताना चाहे तो प्रवीण चौधरी की अगर समय परमिट करे तो कर सकते हैं। अप टू विकास, है ना। चलो ओवर टू। और कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। Anyone asked, willing to ask any questions? Free to ask any question. हाँ, प्रवीण है क्या? प्रवीण चौधरी। विकास हम्म, शुरू कर दो तुम अपना, इंट्रोड्यूस द ठीक है, बुक कि क्या लिखा है, ठीक क्या है, कनेक्शन से। sure. So, hello everyone. This book, rather before I going back to the time, if I look into what pushed me to go into this field, that was surprising. For example, we I think around 7-8 years back, we had one client, and this client was suffering from migraine. And as you all know, during the liver cleanse and our cleansing processes, and we can cure the migraine within 1 or 2 months at the max. And this patient took around 3-4 times, and it was not able to cure. And I was surprised that what has happened.
So I've contacted Dr. Piyush. He's my younger brother. He's my elder brother. And I asked him, okay, what I can do, what I'm missing. After listening all these things, he says, okay, give me the number. I will talk to him. And actually, I forgot after a month. And after a month, I called this student again and asked him whether his issue has been solved or not. And he simply says, yes, it's solved. I said, how come it is solved? He says, sir did a one PLR session and then it was solved. I said, wow, what happened in that PLR session? He says, yes, it was somebody has put me a bullet on my back head and that's why it starts paining. And sir asked me to do certain things, and that's what I did. And after that, I'm not having any pain. And I was zapped. So what? What it is? How come it is possible that somebody can see the past lives and coming back, cure himself? Oh, it was something which is unbelievable for me. So I immediately asked him, Dr. Piyush, that, hey, what you did and how you have done and what you have learned and from where you have learned. See, he's giving me all these stories. And then finally he says, okay, Vikas, why don't you just read my notes? So at that time, the mystery of life was in the pieces, bits and pieces here and there, here and there. So I started reading it. And then I said, Dada, it all looks good, but it's supposed to be something more because I am seeing this is just a beginning. And you have added so many things which is required to introduce this subject, but this subject looks like very, very deep. He said, yes, you can try. So I joined one of the workshops, and that's where around 25 people came. And 5 days we have spent. I learned a lot on those sessions. Officially, I was educated in that session. Then I started exploring. So first thing which was happened that my session was always black, nothing. So we was struggled a lot. Gaur sir has find out actually what is the problem, where I stuck. Immediately he was able to find out. So I was surprised that how somebody can see what I have left around 15 years back and how somebody knows it. It was a surprise for me. Then I said, okay, let's continue. So I started doing sessions, started helping others, finding out slowly, I have opened another Pandora box within the PLR sessions. And that Pandora box was so important that in Mysteries of Life, it is just written as a one line and then it is just out. So I have spent around 2-3 years just to explore that area, which was untouched. And that finally becomes my main area. And I have to start write a book because this was something which is so much, it is there so much, so many things are happening and it's unlimited possibilities. Accidentally, I have opened a like a Pandora box where things are connected to everywhere. It's a portal. You can go anywhere without losing a time. 1 second you can be into some other planet. 1 second you can be in a different world. 1 second you can be anywhere else. You can actually reach out to anyone's soul. You can call the souls. You can heal them, and you can fix their physical problems, their mental problems. It is unlimited. We started exploring. It was not ending at all. So I have to start making notes because so much of information. So I started writing, and every day I have writing. So a beautiful thing was the divine souls also started coming, and they started talking and giving instructions into these sessions, which I am doing. Maybe I'm doing to someone session, some divine souls comes in and says, "Hey, I want to talk to
Vikas, and there is a message for him, and you have to deliver this message. So it has started coming, and people are highly visible. They are connected to me, and it becomes such a beautiful thing. I've started exploring in new possibilities. For example, in the mysteries of life, we have seen only one way of doing the session, that is during the hypnotherapy. We have discovered more and more and more and more. So in my book, I have written around 4 methods to go into the past life. And those are all practically tested and proven. I have tested it with multiple people, and it works all the time. Any of the method you can pick up and choose, and it works. Hypnotherapy is one of the simplest, but if that doesn't work, what are the options? Correct? Because my problem was, if I am not able to see, who is there to answer it? Because one thing I always remember, Dada always says, there is always a second option. There is always a way. You have to find it out. So, okay, so there is one interesting question, whether the book is in English or Hindi. So book is originally written in Hindi and translated into English, and both are available. Previously, we have to wait for a longer period. Somebody has to translate into English or Hindi. So as of now, it is on the dual language, both PDFs, and you can download and you can start reading it. And the book is distributed as a free of cost, right? So because this is the divine which has been asked me to write. The sections has been decided by the divine that this is something you have to write, and you have to put all your experience in it. So they have says, yes, there will be volume 1, then volume 2, volume 3, volume 4, and every book will be having a different names. So coming back to the same place where we have started. So once I have started writing, then things are becoming more and more interesting. I'm not visible, right? But there are so many students which I have, they are highly visible. And I'm keep on doing lot many sessions, and I'm keep on getting messages. So I have noted down each and every message, each and every method. For example, I cannot see, but is there a way? Yes. Surrogacy is one of the way. We don't know what it has been called, but in our method, we can say using the surrogacy, you can do a session. We tried a couple of times using some mistakes, but we were able to do it. Healing sessions. First healing, which is very, very defined, is the water. Water is the biggest healer, as we know always. So how to do a water healing? Then comes to mud. How to do a mud healing? Then comes to fire. How to do a fire healing? Then special, like Shri Yantra. How you can use the Shri Yantra to heal someone? Very, very powerful. So there are so many different ways to do it. I have found one way, which I have written it. And honestly, I thought that it must be shared with others. I should not hold it. So book is written, and around last so many months, we are doing the reviews and making corrections. So let me show you how it looked like. Okay. I hope my screen is visible. Yes, sir. Right? Okay, perfect. So this is the Hindi version, where you can see the name is Bramh Kalam 1. And this front page is also guided by the divine powers. I have not done anything. They have guided me, and it took me a lot of time to design this web page and this front page to get it approved from the divine powers. It took around 30, 40 attempts. Then it was approved. Yeah.
This is just a table of content, and then the book starts. It has everything one by one written. So same as Hindi and same as in English. Exact translation. There is no difference as such. So you can download it from our website. So our website is mol.org.in/ebooks. So either if you go to mol.org, this is actually Mysteries of Life, and go to Past Life Regression, and from there is a download box. Okay. So from the download books, Mysteries of Life is written by Dr. Piyush, and Bramh Kalam is written by me. So Hindi and English both are available. So, any question? Anyone? So, yeah, let me hand it over to Sneha, and she is my one of the fastest student. Okay. So she is connected with me since last 1 year, I believe so. Right? Yes. So let's hear from Sneha. Sneha, the stage is yours. Thank you so much. I mean, to get my name from your voice, 365 days journey and how it has been, what it was last year and what it is today. I was on that side and today I'm on this side. So that itself shows like a living example what the stuff that's written in the book can do to a human being, right? We generally say that do not always just offer money or food to the one who is needy, offer them the skills and the help that will make them efficient enough to earn their own money and have their own food. I would say we have gone a step further now. This is like, I've been thinking for a while since this meeting had started, but Vikasji, you said never doubt your intuitions, right? So I'm gonna follow it today. It is the modern Gita. I'm being very honest. People might say that, Gita is a big word, but this is the modern Gita because anyone who can apply and really use it will understand the journey from the body to the soul because the body has multiple births. The soul has only multiple experiences. And the next set of words, what I would like to say, I wouldn't be able to say it in English. So this part I would like to say in Hindi. तो जब आप इसको पूरी तरह जी लेते हैं तो आप पूरी तरह सरेंडर समर्पित भाव में चले जाते हैं और ये होता है कि हर दिन उठते हैं और बोलते हैं कि हे ईश्वर, मेरे कदम आपके चाल, मेरे हाथ आपके कर्म, मेरी आंखें आपकी नजर, मेरा दिमाग आपके विचार, मेरा मन आपकी सांस, and you live with that and magic happens. So these are my words for this, and thank you Vikas ji. Through you I got to get connected to such divine souls. Gaur sir is there, Piyush ji is there. Piyush ji I remember only seeing in one of the vloggers, celebrities, I don't know if I'm allowed to name them, where Yeah, she had you introduced can. some Sambhavna in 2018. I think all of our journey started in parallel, and she introduced him in her vlogs, and I said, okay, there is some therapy like this. I have personally tried Brian Weiss and Dolores Cannon methods through YouTube, but I never knew I'll come so close to it and be part of it. So thank you so much. Very, very grateful. And wish you all the very best. Thank you, Sneha. Okay, sir. Then you take it over. अरविंद जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप माइक को टच करें अनम्यूट हो जाएंगे. Do I have to pay? Yes, sir. God, sir, you take it over, sir. Okay. सर बुक को डाउनलोड करने के लिए मुझे कितने पैसे पे करने हैं? ये पुस्तक फ्री में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पैसे नहीं लगते. Good evening, everyone, and a very warm welcome to each one of you from my end.
It is a great pleasure to be here in this session, and it is perhaps a fruition of a long-standing relationship with Piyush. There is this talk about love at first sight. So what happened between me and Piyush was love at first sight when we met each other somewhere in 2004 for the first time. And the association kept growing. And here I am today, having been asked to say something about this brilliant book which Vikas has written. So there has been this kind of question which has come up, and I would like to take forward from where Sneha stopped. She spoke in Hindi. So in our tradition, it is said that if you come across a person who is hungry, offer him food. You see a person who is without clothes, offer him clothes. If you see somebody who is needy, offer him some money. And if you see somebody who is lacking in knowledge, offer him, give him knowledge. And if you see somebody who is already having knowledge, then offer him what is known as pragya, the knowing. And if there is somebody who is the knower, then just sit near his feet, grab his feet, and take his blessings, and your best interests will be served. So in this particular universe, knowledge can be had from teachers, from books. But knowing can come only by association with masters. We come across people, our elders, they were not very highly educated. They did not have access to all these gadgets we have today. They did not have Google. But we asked them any question, we went to them with any problem, and they gave us a very mature advice. So where did this maturity come from? It comes from knowing. And every soul that we come across, or all the souls that have incarnated here on this planet, they are in various stages of evolution. So depending upon their evolution, they behave. That is why our scriptures say buddhi karmanusarani. In their past lives, they have done certain karmas. There is some kind of baggage which has been brought forward, and that baggage is determining how they are going to behave in this life today. There was this question that there are people who want to get PLR done and they don't want to pay. Now the question is that the same people, when it comes to getting their son admitted to a good college, they are prepared to pay through their nose to get the child admitted. Why? Because they value what they are getting. But the same person, when it comes to getting spiritual upliftment, getting some karmic baggage lightened, which is not easy. No university is offering a course in how to get the karmic baggage lightened. Something which is received is invaluable. But when it comes to receiving that, then the mind creates that doubt. How much should I pay? Should I pay anything? Oh, in our ancient India, there were people who did not charge anything. Why should I pay? So this is how the souls which are in varying stages of evolution, they are going to behave. This is the universal drama. We don't have to be caught up in the universal drama. We should remain focused on knowing.
When Dronacharya asked Arjuna, while they were practicing archery, what do you see? Do you see the fish which has been placed there at the target? He said, no, I don't see anything. I only see the eye of the fish, and my arrow is going to pierce that. So that has to be the focus of the person who is a seeker, because he wants to know the truth. And it is here that we have to draw a distinction between information and real knowing. Unfortunately, our system of education is such that it is offering information. But information, if it is used, it gets converted into knowledge. And knowledge, when it is practiced over and over again, it is converted into knowing. And the book our dear friend Vikas Johari has written, it has come from the space of knowing. The principle of PLR is very simple. Everything is embedded because of some sanskar, some event in past life. That is how we are made in this life. That is how we are bringing forward certain fears, certain anxieties, certain behavioral patterns, traits, relationships. When the PLR happens and we go into that past life, we relive that incident. What is happening is that the power of our awareness falls on that incident. And awareness is sheer light. Whenever light falls in a dark spot, that darkness will not be there anymore. If a room is dark, we do not know what is inside that room. So what do? We bring in a lamp. The lamp does not chase the darkness away. There is nothing that is going to chase the darkness away. Just the light is good enough, and everything comes into focus because everything gets illumined. The moment light falls on it, it is illumined. So you see a rope in the darkness or in a semi-darkness, it may seem like a serpent, but when the light falls, it becomes a rope. And there is a serpent when the light is hazy, you may see, oh, it is a rope. But when the light falls, you know that it is a serpent. So we begin to see what is without any appendage, without any distortion. And that is the secret of PLR. It happens in many ways. People who are in spiritual life, when they meditate in deeper states of meditation, they get connected to their subconscious mind. And they can see some of the patterns, some of the past life impressions come alive in meditation, and you can see them, why it is happening, what is happening. But PLR is something which is for people who by themselves cannot do this. But with a compassionate guide, they can be led to a spot where these events or access to these events become available easily. And those impressions can be erased. And once these impressions are erased, the life is transformed. Every aspect of a spiritual practice, whether it is physical yoga, it is practicing pranayam, it is about kriya, meditation, pranic healing, you name it, every practice has only one goal: how to remove those things from our mind which are not allowing us to see the reality as it is. PLR is one of those methods where it becomes very easy. And here I have to say something about this book, which our dear friend Vikas has penned. I won't call it written, because writing is something which comes from the mind. But there are certain things which are revealed. So when we really apply ourselves to something over and over again, then what happens is that
the mind becomes silent. And because the mind is silent, one gets access to the higher zones of awareness. And that is where God starts speaking through a person. So such a person does not really have to know something in advance. When you are in that state, then what the existence wants to offer, that what the existence wants to offer, that starts flowing out, because you are the channel of the divine. Now this book has come, or it has descended through Vikas, because the divine has chosen that this book should come through him. It's a rare privilege which has been granted to him, and he has used that privilege because of the karmas of past lives, because of his evolution in this life, and because of his spirit of service to mankind. And this is not containing ordinary knowledge. It is not about a manual which will give you some kind of a guideline, or it is not a workbook. It has to be internalized. And when it is internalized, then the portal will open. Vikas spoke about the opening of the portal. So when you get into that portal, then you are not operating in a niche market. You talk to the scientists. Somebody is a physicist, but he is doing certain area of, in that physics, he goes on and on and on. And at some point of time, he is dealing with all kinds of different areas of knowledge. It is no longer pure physics. If similarly a chemist, if he is really going into some kind of a deep analysis of things, then it is no longer chemistry. He is dealing with the laws of physics, he is dealing with the behavioral tendencies of atoms, and so many other things that come up. So everything is connected. So when you are connected to this kind of a portal, you get into that divine field, then access is given to so many things. And everything starts falling into place. Then you are not left with your precedent. Ordinary minds look for precedent. In our lives, when there is a problem, we always go back into time and say, oh, when this problem arose, what did I do? What did I learn? But a silent mind, a divinely guided mind, he does not need, or it does not need precedent. That mind just stops thinking, and the answer is there. I was with a great sage once, and a scientist from NASA came and he started talking to him. And he said, oh, we are in NASA, we are now, looking at the shape and size of the universe. And this saint started telling him, using scientific terminology, how the interplanetary force, stellar forces are working in the universe, and how, because of the working of those forces, the shape and size of the universe are changing constantly. And this scientist, who thought he knew, his jaw dropped in amazement. And after a while, he asked this saint, how do you know all this? And the saint said, I go to sleep for 4 hours in the night, and within 5 minutes of hitting the bed, my soul goes out. I have traveled the entire universe, and I have seen everything. But then he said, look, you are a scientist, and you will ask for evidence. I am the evidence. Then he said, have you ever wondered why the scientists, whenever they find out something new, they call it research? What does research mean? There is a basket in which everything is contained,
And you are going to that basket again to take out some facts and place it before your audience or your people. It is research. But a person who is established in the self, he has access to search. So when you have access to search, you are in the field of infinite possibilities. And all possibilities are open to you. Vikas has entered that field. So infinite possibilities are open. And I can share something from some personal experience. I became a subject for Vikas. So I was not keeping well, and one night at 10:30 in the night, he calls me up. And after a few moments, he asked me, are you not feeling well? What is happening? And then suddenly he said, oh, your soul has come to Sneha and it wants some healing. And they did some psychic surgery on it. Because of whatever we keep doing, helping people, healing, there are certain things that sometimes we can gather in the process that had to be removed. But it was something that at the soul level, the soul wanted. I was not aware of it in my mind. And Vikas was aware and he did that for me. So it is the field of infinite possibilities. It is open. And that is how he said that PLR is there is one method to do it. There are so many other methods to do it. And it happens, when you are in a kind of meeting people, you can just see. There are flashes when you can see what is holding a person back. And you share it with them. So you also don't know how you know it. We have our blind spots where we don't know that we don't know. And there are these existential, memory spots where we know, but we don't know how we know. Because it just happens, you know it. And you are in the moment, so you trust your intuition and offer it to the other person, and it works. So I think I have taken a lot of time. I must bring myself to a stop. So it is the Vikas has been on a journey of tremendous evolution. And it is when a person evolves, he not only evolves for himself, he becomes a guiding light for others. And that is what he is doing. Helping others become like him and helping so many other people who have certain difficulties or challenges. So help them overcome those challenges. The joy that a person gets by helping other people is incomparable. The biggest reward is to see that a person who was challenged, he feels happy. His problems have been resolved. This is the biggest reward that can be. It's a different matter that sometimes there are people who don't really understand and appreciate what they have received. But that is their karma. Because what they are doing to their teachers and their healers in this life, when they become evolved souls and they start healing, then they will also meet clients or other people who will not respect them. So they will learn for whatever they are doing. Existence has a beautiful way of bringing teachings to everybody. So thank you so much, Vikas, for giving me this opportunity to be here. And with great love and great joy, we offer this book to everybody, to this universe. And may this book help everyone grow. That is the only purpose for which all souls are here. They have to grow themselves and they have to help other souls grow. So if you permit me, I would just like to chant a shloka. Sure, sir. Om Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. This is the nature of truth. It is perfect. This one is perfect, and that truth is shining through everybody else. So that is also perfect. Some souls may not be aware of their innate perfection, but that is fine. And what is the nature of this perfect? That from this perfect, something is taken out that also is perfect. And yet, this source does not lose any of its perfection. That is why we say, Jyot se Jyot jagao. Sadguru, Jyot se Jyot jagao. That lamp is shining with its own light. And an unlit lamp comes in contact with this lamp, and it starts having the same illumination, whereas the original lamp does not lose any of light. So this is a process. Vikas has come here in this world to illumine so many lives. Wish you all the best, dear Vikas. God bless you. बहुत Thank you बढ़िया very सर, much, sir. बहुत ही बढ़िया। हम सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार सर। किसी और का कोई प्रश्न नहीं हो तो सभा को समाप्त करते हैं, क्योंकि गौरव के बोलने के बाद कुछ बोलने को हम लोग के लिए रह भी नहीं जाता है। बिल्कुल। जो भी शब्द उन्होंने कहे, एक एक शब्द बिल्कुल मोती की तरह पूरे पुराया हुआ था, और बहुत हमको भी, मैं तो जब भी उनके पास बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। ये कुछ रिश्ता भी ऐसा होता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो विकास क्लोज करते हैं फिर ना। ठीक सर, क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन। सभी को आभार। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you very much. बाय बाय। Bye bye. Take care. So Vikas sir for giving this book for everyone, और उससे भी big thank you for कि आपने हमें आज गौर साहब को इतने देर तक सुनने का मौका दिया। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Congratulations, Vikas. Thank you very much.